Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu and the other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 27th of January. The first topic is Andhra Pradesh to get 30 new districts. We'll see the detail of this as well. Second, Prime Minister to host first India Central Asia Summit. Second, increase in vacancies as government hold promotions. Second last is US Fed Reserve signals for the rate increase. We'll see the repercussion that India can have in terms of the rate that is going to be increased in US. And the last is unlock India food processing potential. So this is an editorial from the Hindu. Apart from this, there would be some MCQ questions. These questions would be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. If you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press the like button. And just to tell you about the newest app, this is a newer version 2.0, which will give you news and article, daily MCQs, video and blogs, and A to Z study material. For more details, you can refer to the description box where I provided a dedicated link to download the app. So the first news of the day, that is Andhra Pradesh to get 30 new districts. This particular news is important for General Studies Paper 2, functions and responsibility for union, state, and issues and challenging pertaining to the federal structures. So what is there in this news? Recently जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज की है which say that there would be 30 new districts that would be coming up in the Andhra Pradesh, right? At present, there are 13 districts which is there in the Andhra Pradesh. You can see this map, right? These are the list of 13 districts, Amravati being the capital of the Andhra Pradesh, right? And if the 13, there is already existing 13 plus 13, that is a new district that would be coming up. So the total number amounts to 26, right? So तेलंगाना की जो फॉर्मेशन है वो हुई थी रिसेंटली, नॉट वेरी ओल्ड, लाइक 2014 में ये फॉर्मेशन हुई है ऑन जून इटसेल्फ, राइट? सो जून 2014 में तेलंगाना को कार्व आउट किया गया था आंध्र प्रदेश से. And now what finally Andhra Pradesh government has decided that they would be coming up with more 13 districts and the total number would be 26. So which are the list of the district that would come up? So these are the list of the district with their headquarters. These names are not that important, but you can read it. You can pause this video and you can read out the entire district with their headquarters. Now, what is the rationale behind the new district formation? Why the government of Andhra Pradesh has decided to come up with this new formation of the districts? So first and foremost is to promote a better administrations, right? एक better administration provide करने के लिए ज़रूरी है कि जो districts हैं उनके areas जो हैं वो थोड़े कम हो, right? And for the development of this particular district, these are the thing that is taken into consideration to carve out the new district, right? और गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें प्रपोज की है under their power, which is provided under the section 3 subsection 5 of Andhra Pradesh District Formation Act 1974, right? तो यहाँ पे जो सबसे important question है आपके लिए जानना, that what is the role of central government in terms of deciding or bifurcation of a district? तो क्या पहले तो इससे पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है, हाउ द न्यू डिस्ट्रिक्ट इज टेकिंग प्लेस, हाउ इट इज बीइंग फॉर्म्ड. सो द पावर टू क्रिएट डिस्ट्रिक्ट और ऑल्टर एबॉलिश द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, ये रेस्ट करती है, सोल पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. विल सी द रेलेवेंस ऑफ द सेंटर ऑल्सो, जो कि सेंटर की कोई रोल नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में. एंड देयर कैन बी ईदर डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और पासिंग अ लॉ इन द स्टेट असेंबली. तो अगर स्टेट चाहे तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके भी चेंजेस कर सकती है, बाइफर्केशन कर सकती है, या फिर उस स्टेट असेंबली में लॉ ला के भी कर सकती है. एंड मेनी स्टेट्स हैव प्रेफर द मोस्ट इजीएस्ट रूट, दैट इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बाय सिंपली इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन देयर ऑफिशियल गेजेट. तो ये ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होने के बाद ये एप्लीकेबल हो जाती है और उस पर प्रोसेस और फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. नाउ व्हाट इज अ रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल होता भी है स्टेट के बाइफर्केशंस में, राइट? इस न्यूज में इतनी सारी डिटेल्स नहीं दी गई हैं, बट आई एम डिस्कसिंग बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, राइट? सो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी रोल नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ
ऑल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और क्रिएशन ऑफ न्यू वन, राइट। तो ये सारी जो सोल अथॉरिटी है, ये जो प्रोग्रेशन है, दैट इज कंप्लीटली विद द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो स्टेट के पास सोल अथॉरिटी। Now, ministry, जो home ministry that come in picture when state want to change the name of district or railway stations. जब उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट की नेम चेंज करनी है, कोई रेलवे स्टेशन को चेंज करना, सो दे हैव टू गिव इंटीमेशंस टू द होम मिनिस्ट्री। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करती हैं अगर वो नाम या फिर किसी तरह की चेंजेस कर रही हैं। दे हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो को देनी होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बिकॉज पिन कोड वुड बी एडेड और चेंज्ड, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि पूरी मैपिंग करती है इंडिया के, एंड रेलवे मिनिस्ट्री टू सीक द क्लियरेंसेज। बस इतनी चीजें करनी होती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं है इसमें। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट इज एनओसी मे बी इशूड in terms of examining the reply. Now, the other news, Prime Minister to host first India Central Summit. Tomorrow, this is going to be inaugurated. This is important for General Studies Paper 2, Bilateral Regional Grouping and Agreement, Evolving India and Affecting India's Interest. So, what is there in this news? Prime Minister, जो कि आज inaugurate करने वाले हैं इस जो एशिया समिट है, सेंट्रल एशिया समिट, 27th of January, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये कॉन्फ्रेंस होनी है। And 5 participant countries are there. First is Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. So these are the participant country along with India. Now focus क्या होनी है इस summit की? Because tomorrow the summit would be there. Some more development that is there जो आज होगी उसकी publish फिर कल भी होगी न्यूज़पेपर में. We'll see whether to discuss that or not. अगर कल कुछ बहुत important बातें आती तो मैं आपके साथ discuss करूँगा. So focus area first and foremost is the trade and connections, how connectivity can be increased, building development partnership between all 5 countries including India, and enhancing the cultural and people to people contact, right? ये एक focus area है पूरे summit की. Now trade को कैसे boost की जाए? This is something which is very important. Amid the COVID-19 and coronavirus pandemic, हर एक countries की जो performance है वो deteriorate की है. So at this conference, the country is expected to propose a trade between each other, खास करके इंडिया के specific region से, and it is expected ये सारे countries मिला करके जो 5 countries है plus India, they would mount up to $2 billion at present, and if it comes from energy and port from Kazakhstan. And India ने जो line of credit है वो $1 billion तक को extend करने की बात की गई है for important sectors like energy, healthcare, connectivity, IT, agriculture in 2020. This is what India already have given as a line of credit. Now, India has also proposed to increase the number of educational opportunities जो कि student है Central Asian countries में, they can come to India. Student from India, if they want to reach out to the other countries, they can also do the same. And India has hoped to build a trilateral working group in Chabahar with India and Uzbekistan, जो ईरान और यूबेकिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाई जाएगी. अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन को लेकर के भी कंसर्न है, बिकॉज वी हैव सीन द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, तालिबान हैज़ ओवरटेकन. तो वहाँ की इस चीज़ों को लेकर के एससीओ जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी ये बातों को हाईलाइट की गई थी. इंडिया की तरफ से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मिस्टर अजीत डोभाल, ही हैज़ हाईलाइटेड द इशू and this was discussed with the foreign ministerial level also, right? But at this point of time, it is very important to ensure peace, stability and tranquility in the region of Afghanistan. Now the other news, increase in this is increase in vacancies as government hold promotions, right? So this particular news is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it. तो किस तरह से जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खास करके पूरी स्ट्रक्चर है, डेपुटेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही है एंड वैकेंसीज आर इंक्रीजिंग. विल सी द डिटेल ऑफ दिस. नाउ द एम्प्लॉयज हैव पिटिशंस द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक प्ली फाइल की गई है डीओपीटी के खिलाफ, एंड दे हैव आस्क्ड कि ऐसे लोग जो रिटायर होने वाले हैं उनको रिटायर करके जो बाकी लोग अलाइंड है प्रमोशंस के लिए उनको जल्दी से जल्दी सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स ये सारी चीज़ें दी जाए, सो दैट द पीपल हु इज एक्चुअली अलाइंड कैन टाई अप एंड फिल द पोस्ट. So nearly 30% of the position is in the middle or senior level management rank. सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में जो प्रमोशंस होनी है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में वो पिछले 6 सालों से रुकी हुई है, बिकॉज ऑफ विच द प्रमोशंस एंड अदर थिंग्स आर नॉट टेकिंग प्लेस, विच इज क्रिएटिंग अ बॉटलनेक्स इन द गवर्नेंस पार्ट. नाउ करंट सिचुएशन की अगर बात करें, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज फोरम होती है, एक एसोसिएशन है गवर्नमेंट ऑफिसर की, जिसमें कि अराउंड
6,210 officers in the rank of section officers, under secretary, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरीज के टोटल 1839 पोजीशन है जो कि अभी तक वेकेंट है. नाउ दिस ऑफिसर are the backbone. Definitely, these officers are backbone in terms of file, documentations, order process that has to be processed by the ministries. तो ये backbone है जो कि पूरी ministries के लिए काम करते हैं. And even these promotions are stuck on the pretext of pending court cases. Supreme Court में एक केस भी फाइल की गई है जहाँ पे प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्टेस एंड शेड्यूल ट्राइब को लेकर के जॉब प्रमोशंस में बातें कही गई थी अक्टूबर 2021 में. बट स्टिल देयर इज नो रिजोल्यूशन गिवन एंड गवर्नमेंट इज रिलक्टेंट to come up with a clarity on this, which is also creating a problem in terms of filling the vacancies. Now, shortage of AIS officer, आपने recently देखा होगा जो amendment की गई है section 6 of the All India Services Act 1954 में, जहाँ पे स्टेट की अब कंसेंट मैंडेटरी नहीं होगी. इसी वजह से ये प्रोसेस की गई है. जो वैकेंसीज हैं अभी भी एक्यूट शॉर्टेज है ऑल इंडिया सर्विसेज में, जहाँ पे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर की शॉर्टेज है. और गवर्नमेंट ने डीओपीटी को ये कंसेंट रेज की गई है और अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट रिसेंट में लेकर के आई है जहाँ पे जो स्टेट्स के कंसेंट होंगे वो अब मैंडेटरी नहीं होंगे इन टर्म्स ऑफ डिप्यूटिंग द ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट. सो दिस इज द रीजन वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप. मैंने आपको कल भी बताया 80% तक हाइक की है गवर्नमेंट ने अपनी वैकेंसीज में भी इन टर्म्स ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अदर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स पोस्ट. So this is the reason why the proposed amendment was there and the shortage has been highlighted in different occasion also, but it is very important कि जो shortage है वो fill की जाए ताकि जो governance की process है वो सही से चले. If you can see this particular infograph, that will give you an idea that how much vacancies are underlining. Over 29 lakh vacancies are there in the government job. ये आप वीडियो को पॉज करके accordingly देख सकते हैं. सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी अभी भी है that is for the teachers. पुलिस के बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, रेलवेज के डिपार्टमेंट है, आंगनबाड़ी सर्विसेज है, टीचर्स है, पोस्टल डिपार्टमेंट. दीज आर द टॉप वैकेंसीज डिपार्टमेंट वेयर स्टिल द पीपल आर नीडेड. बाकी ये सारी डिपार्टमेंट ऑलरेडी यू कैन पॉज इट, यू कैन रीड आउट एवरीथिंग. US Fed Reserve signaled the rate increase. This particular news is important for General Studies Paper 3. Economy and issues related to planning, mobilization, growth and development. यूएस फेड ने एक हिंट किया है कि वो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे एंड दे सेड दैट इन्फ्लेशन हैज़ बिन रनिंग अबव द पॉलिसी मेकर टारगेट्स. और जो लेबर मार्केट है उसमें देखा यह गया है कि एम्प्लॉयज़ की जो सप्लाई है उसमें भी शॉर्टेज हुई है. सो सेंट्रल बैंक हैज़ लेफ्ट द रेट अनचेंज. जो नियर जीरो की जो पॉलिसी थी वो अडॉप्ट की गई थी एंड द सेम हैज़ ऑल्सो डन बाय आरबीआई इन इंडिया. राइट, आरबीआई ने भी कोई रेट में चेंजेस नहीं की गई थे बिकॉज दे वांटेड जो लिक्विडिटी है मार्केट में दैट शुड बी देयर. राइट, तो लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए आरबीआई ने इसे मेजर्स लिए. बट नाउ इफ यूएस फेड इज टेकिंग सम डिसीजन विद रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट रेट, डेफिनेटली उसमें इंडिया को भी रिपरकशन झेलने होंगे और इंडिया की जो आरबीआई है वो भी कुछ एक्शंस ले सकती है अपने आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें भी. राइट, सो कंज्यूमर प्राइस आर राइजिंग फास्टेस्ट. ये यूएस की बात कर रहा हूँ. 1982 में इवन जो चीज़ें हुई है पॉलिटिकल जो लाइबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट की है, ये सबसे ज़्यादा भी देखी गई है. एंड इट इज़ फेड जॉब टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल एंड टू सेट अ स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट. तो ये किसी भी गवर्नमेंट है वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है उसकी ये ड्यूटी होती है. तो यूएस में फेड जो है, यूएस फेड, वो इसकी जॉब है. इंडिया में आरबीआई हैज़ द रोल टू इंश्योर दैट the credit policy and even talking about the inflations and everything is put in place. Unemployment rate has fallen to 3.9%, down from 14.7% peak, जो कि worst economic point रही थी February 2022 के लेवल पे. Wages are growing and the fastest paced in the decades. This is what the US Fed has to say in terms of US performances. Now इसकी क्या इम्पैक्ट होगी इंडिया इकोनॉमी पे, जिस तरह से यूएस ने अपनी फेड जो इंटरेस्ट बढ़ाएगी उसकी क्या इम्पैक्ट होगी. राइट, सो इम्पैक्ट ऑफ राइज ऑफ यूएस फेड इन इंटरेस्ट रेट नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल मार्केट पे इसकी इम्पैक्ट देखी जाएगी. अगर इंडिया की बात करें, फर्स्टली जो हाइक है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो कैश इनफ्लो इंडिया में हो रही है उससे वंचित करेगी. उससे बेसिकली दे वुड बी डूइंग द पीपल दैट actually investing, the foreign investor that is actually coming to India, they would be withdrawing their fund and they would be going back to the country. Right, so this would make India less attractive in terms of investment. And secondly, increase in the interest rate would also result in the weaker rupee comparison. If you compare dollar via rupee, you will find that the difference is there because of the inflation adjustment
that is coming and depreciating the value of the rupee comes dollar. So this would again bring foreign investor lower to the return and their investment would again have a shortfall. Unlock India's food processing potential. This particular news is an editorial important for General Studies Paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it. So under this, I'll be discussing some of the important things like process so far made, what is the progress that has been made, case study, demand for food products, easing access to credit, and the way forward. And the entire editorial talks about the food processing industry. So food, which is a very significant thing in terms of connecting people, connecting community, connecting traditions, और जो हमारे पास्ट और फ्यूचर है उसको कनेक्ट करने में फूड की बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है अक्रॉस इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड. तो जो जो चैलेंज है सबसे बड़ी 10 बिलियन पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड में, जिसको एक पूरे सेंचुरी में किस तरह से कैलिब्रेट किया जाए, व्हाट फ्रंट वी शुड एक्चुअली वर्क सो दैट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड शुड बी देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. तो डिमांड की बात की गई है, जो डिमांड एफिशिएंट है उसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है एंड वी नीड टू कम टू अ कंक्लूजन वेयर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज देयर और इकोनॉमिक वाइबिलिटी इज देयर, राइट. ये दो बहुत ही की इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ध्यान रखनी है. इकोनॉमिकली वाइबल और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल हो ताकि ये अफोर्डेबल हो सारे लोगों के लिए. Now, what was the progress in terms of India? क्या क्या इंडिया में प्रोग्रेस की गई? इंडिया ने PLI स्कीम लेकर के आई है फॉर द फूड सेक्टर, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स. यहाँ पे 10,900 करोड़ रुपीज मार्क की गई है फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ कैटेगरी 1, राइट. और ऑलमोस्ट 60 एप्लीकेंट्स हैं जिनको अप्रूव की गई है अंडर कैटेगरी 1. और फर्म्स को इंक्रीमेंटल सेल्स के लिए ब्रांडिंग, मार्केटिंग, चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के अब्रॉड, ये सारी चीज़ों में उनको प्रमोशंस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की एड या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स. इफ यू विल बी राइटिंग इन मेन्स, मेक श्योर वी इनकॉर्पोरेट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ टू ब्रिज द गैप, गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट 13 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था फॉर द PLI और इसको डेडिकेट की है स्पेशली कैटेगरी 3 फॉर सपोर्टिंग दैम एंड ब्रांडिंग एंड अदर मार्केटिंग स्टफ्स. दिस इंश्योर कि जो इंडिया की शेयर्ड वैल्यू है वो एक एक्सपोर्ट बास्केट में इंप्रूव हो, राइट. इफ दिस इज बीइंग इंप्रूव, डेफिनेटली मोर फॉरेक्स, मोर जो फॉरेन करेंसीज है वो आएंगी, इन्वेस्टमेंट भी आएंगे. दिस वुड बी समथिंग विच वुड हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रॉफिट दैट वुड बी कमिंग टू इंडिया. नाउ एक केस स्टडी की गई है जहाँ ये बताया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने केस स्टडी की थी विच फाउंड दैट 1% इंक्रीज इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ लेड टू द बेनिफिट ऑफ ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ की उनकी आउटपुट जो है वो 0.06% तक बढ़ी है ना लॉन्गर, राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, चाहे वो किसी और भी कंट्री हो, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो फार्मर्स को भी एड करे, उस पूरे चेन में जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हेल्प करे. So some states like Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, these states are reportedly doing good governance. इनकी रैंकिंग भी हुई है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ में. these states are performing well, चाहे वो कनेक्टिविटी टू रूरल हैबिटेशंस हो या फिर इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी हद तक हाईएस्ट है. इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है. यू कैन नोट डाउन द नेम ऑफ दैट स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश. नाउ डिमांड फॉर फूड प्रोड्यूसर्स, राइट. जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी है. वी हैव सीन ड्यूरिंग पेंडेमिक व्हाट हैज हैपेंड, मोस्ट पीपल हैव डिमांडेड और वाज एक्चुअली डूइंग द वर्क फ्रॉम होम, राइट. जो WHS है, वर्क फ्रॉम होम की कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आई. उसके बाद जो फूड प्रोडक्ट की डिमांड है, रेडी टू मेड फूड, रेडी टू ईट फूड्स की जो डिमांड है वो बढ़ी है एंड दिस हैज राइजन अप टू 170 सेल्स जो है ऑलमोस्ट इतनी तक प्लंज की है फ्रॉम मार्च टू जून 2020. वी हैव सीन that the demand of food, the packed food, the ready to eat food has on the higher side, right. तो पेंडेमिक ने जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, जो फंक्शनल फूड्स है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च पैड ऑन द हेल्थ ओरिएंटेड स्टार्टअप, जहाँ पे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी स्टार्ट की जा सकती है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट डिमांड इज अराइजिंग. नाउ ईजिंग एक्सेस टू क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के वहाँ के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए. तो स्मार्ट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पीयर टू पीयर लेंडिंग होनी ज़रूरत है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो या किसी और इंडस्ट्रीज हो. नाउ एक्सेस टू कैपिटल इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेड रेसिबल डिस्काउंट सिस्टम जो है एक प्लेटफॉर्म है विच वुड बी डेफिनेटली फैसिलिटेटिंग द डिस्काउंटेड रेट फॉर द MSME, दैट इज द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और उनके मल्टी फंक्शन जो फाइनेंसरीज हैं उनके लिए भी ये हेल्प करेंगे. तो access to credit is very important both for the MSME and other small enterprises or entrepreneurship that is working.
Now, if you talk about the way forward for this kind of article, how you can conclude your answer, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो फूड हैबिट्स बढ़ रही है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना कीजिए. एंड द नेशन मस्ट कम टुगेदर टू अ रोड मैप वेयर efficient value food chain should be promoted. This is what the government should be doing. और हर एक नए इंटरप्रेन्योर जो हैं उनको ग्रीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, राइट. बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स और भी हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फूड वी नीड टू इंश्योर कि वी आर नॉट डिस्टर्बिंग द नेचुरल रिसोर्सेज मच. एंड बाय वेलकमिंग अ न्यू ब्रांड इन दिस कैटेगरी, जो PLI स्कीम्स हैं सारे सेक्टर्स में, ऑलमोस्ट 13 सेक्टर आर देयर विद गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एज अ PLI इंपॉर्टेंट सेक्टर्स. This would enable our ecosystem for innovation for both food products and processes, right? So these is a two big entity in India that can has a huge potential even in terms of consumer behavior, consumer approach, and giving benefit back to the economy, right? So this is how the way forward can be concluded. Now moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. तो कल के जो ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन सी है और दूसरे वाले ऑप्शंस के भी करेक्ट ऑप्शन सी है. ना आपको प्रैक्टिस करना है ओ स्मार्ट. ये क्वेश्चंस हैं, क्या है ये? एम्स टू रेगुलेट ओशियंस मरीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप with IA to promote transparency in jute sector, liquidity monitoring tool for the stock market. This is the first question. Second question, International Energy Agency के बारे में आपको बताना है. The Energy Outlook report is being released by IEA annually and India is not an associate member of IEA. So you have to check which among the following is a correct answer. This is a kind of homework that you have to do at your home. And we'll be coming up with the answers on tomorrow's video. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.